Hello student, Jai Swaminarayana. Today I will take chapter number 6, application of remote sensing. Remote sensing applications in environmental monitoring. Okay. तो environmental monitoring करने के लिए remote sensing कैसे यूज होता है, इसमें ये डिस्कशन है. और एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज है, ओके, कोई भी डेटा भी चाहिए तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का यूज करके हो सकता है. इंट्रोडक्शन. Remote sensing satellite images together with the geographic information system tools have been now extensively used for the environmental monitoring. Okay, that means remote sensing satellite images विथ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल दोनों को मिला के हमें कोई भी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करना है तो वो हम कर सकते हैं. वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, देन सॉइल salinity मैपिंग. सॉइल salinity दैट मीन्स व्हाट, सी वाटर दैट इज कॉल्ड सलाइन वाटर. तो उसमें सॉइल में सैलिनिटी कितनी है, सॉइल सी वाटर है, ये सॉइल की बात है, तो सॉइल में सैलिनिटी कितनी है तो वो जानना है, तो भी रिमोट सेंसिंग इमेजेस का यूज होता है. देन डिटेक्शन ऑफ द ऑयल स्पिल्स. ओके. देन असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन. डिटेक्शन ऑफ द ऑयल स्पिल्स यानी मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे ऑयल ज्यादा है. फॉर एग्जांपल सी में ऑयल है, दैन सॉइल में ऑयल है, किस जगह पे ऑयल है वो मुझे एसेस करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं. देन असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन. दैट मीन्स हमें एसेस करना हो और मॉनिटर करना हो. लैंड डिग्रेडेशन दैट मीन्स उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसका मुझे असेसमेंट करना हो तो हम इससे कर सकते हैं. देन वेट लैंड मैपिंग. वेट लैंड मैपिंग करना हो तो भी कर सकते हैं. वेट लैंड दैट मीन्स भीनी जमीन जो है एनु मैपिंग करવું હોય तो उसका मैपिंग, फॉर एग्जांपल जमीन है वो थोड़ी गीली है तो उसका जमीन है वो गीली जमीन है, ओके, तो उसका मैपिंग करना हो तो हम कर सकते हैं. आर सम ऑफ द एप्लीकेशन इन विच द रिमोट सेंसिंग डेटा हैव बीन वाइडली यूज्ड. This lecture covers the remote sensing application in environmental monitoring with a special reference to water quality and land degradation problems. इससे पता चलता है कि वाटर की क्वालिटी क्या है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन से, और दूसरा कि लैंड डिग्रेडेशन भी पता चलता है, लैंड कितनी प्रोडक्टिव है कि नहीं है वो भी इससे पता चलता है. देन remote sensing in water quality monitoring. The term water quality indicates the physical, chemical, biological characteristics of the water. Temperature, chlorophyll content, turbidity, clarity, total suspended solids, nutrients, color, dissolved organic matters, then trypton, then dissolved oxygen, pH, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, okay, total organic carbon, bacteria content are some of the commonly used water quality parameters. वो जानना हो तो हम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं. In remote sensing, water quality parameters are estimated by measuring the changes in the optical properties of the water caused by the presence of the contaminants. That means इसमें क्या होता है कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, तो जो भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है वो कंटामिनेंट्स के द्वारा, दैट मीन्स जो भी वाटर की क्वालिटी है तो वो कई बार क्या है, वाटर क्वालिटी जो भी कॉन्टामिनेंट्स है उसके हिसाब से वो सब क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है, ओके. और उसको बोल सकते हैं कि वाटर क्वालिटी जो प्योर वाटर होता है वो प्योर नहीं रहता है, उसमें ऑयल इम्प्योरिटीज वगैरह आती है.
तो मुझे जानना है तो रिमोट सेंसिंग का यूज हम कर सकते हैं. Therefore, optical remote sensing has been commonly used for estimating the water quality parameters. Then, figure 1 shows the Landsat TM image of Fitzroy and Bay in Australia, Stew and Capel Bay in Australia. The image taken on May 2003 shows the color difference of the water near the estuary mouth, and which is due to the presence of the suspended sediments. Okay. ओके तो यहाँ पे एक आपको इमेज मिली है जिसमें सस्पेंडेड सेडिमेंट का यूज जो भी इम्प्योरिटीज है सस्पेंडेड सेडिमेंट्स है उसकी वजह से यहाँ पे कलर डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्योर है और यहाँ पे जो है वो सस्पेंडेड सेडिमेंट की वजह से कलर डिफरेंस आ रहा है. ओके The water quality parameters that have been successfully extracted using the remote sensing technique include the chlorophyll content, turbidity, Sachi depth, then total suspended solids, color, dissolved organic matter, trypton, okay, thermal pollution in lakes, and estuaries is monitored using the thermal remote sensing टेक्निक. तो इन शॉर्ट इसमें से ये पता चलता है कि हमें फॉर एग्जांपल इम्प्योरिटीज है तो आपको रिमोट सेंसिंग इमेज इसमें कुछ डिफरेंस दिखेगा, उसका इमेज डिफरेंट दिखेगा. ओके और सेम इमेज है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है जो भी वाटर है उसमें, पर इमेज थोड़ा डिफरेंट है, कलर डिफरेंस आ रहा है. तो ऐसा समझना चाहिए हमें कि अंदर वाटर में कुछ impurities है. Then the algorithms for the estimation of the water quality parameters from the remote sensing data. The estimation of the water quality parameters using the remote sensing data is based on the relationship between the concentration of the pollutant in the water and the consequent changes in the optical properties as observed in the satellite images. That means जो भी pollutant है water में उसका concentration कितना है, ओके और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में वाटर की, तो वो सब देखना होता है. ओके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एज ऑब्जर्व्ड इन द सैटेलाइट इमेजेस. सैटेलाइट इमेजेस है उसमें क्या है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंजेस आएगा. ओके दैट मीन्स जो भी वाटर में पॉल्यूटेंट ऐड हुआ तो उसकी वजह से और कॉन्सेंट्रेशन कितना है पॉल्यूटेंट का उसकी वजह से जो भी उसका जो फोटोग्राफ है उसमें चेंजेस आएगा. सैटेलाइट इमेजेस में चेंजेस आएगा. वेवलेंथ और बैंड्स यूज फॉर द वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग. The optimum water length for monitoring the water quality parameter through the remote sensing depends on the substance that is measured. Okay, optimum wavelength for monitoring the water quality parameters through the remote sensing depends on the substance that is measured. कौन सा हमें substance measure करना है. Okay. तो उसके लिए हम कौन सी वेवलेंथ का यूज करेंगे तो उसका वाटर क्वालिटी का जो भी हम देख पाए कि क्या है उसका पैरामीटर क्या है, तो इसीलिए हमें सब्सटेंस ऐसा यूज कर कौन सा यूज करें जिस कौन सा सब्सटेंस है जिसके लिए ये वेवलेंथ का रिमोट सेंसिंग का यूज करके हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, राइट इंफॉर्मेशन मिलेगा. Based on several in-situ analysis and the VIS and NIR, VIS is visual infrared, VIS and NIR. Then NIR narrow infrared portion of the EMR spectrum, visible light spectrum, and
NIR portion of the EMR spectrum with the wavelength ranging from 0.7 to 0.8 micrometer have been considered to be most useful band for monitoring the suspended sediments in the water. For example, suspended sediments है तो उसका जो भी प्रॉपर्टीज होता है वाटर का वो चेंज हो जाए, उसकी वजह से जो भी रिमोट सेंसिंग इमेजेस है उसमें चेंज आएगा. The optical remote sensing using the VIS and NIR bands have been preferred for measuring the chlorophyll content, turbidity, CDOM, then trypton, etc. Then next one is algorithm used for the estimation of the water quality parameters. The algorithm or the models used for the estimation of the water quality parameters can be classified into empirical relationships, that is relative transfer models or physical models. The empirical models use the relationship between the water quality parameters and the spectral records. General form of such relationships are the following, where Y is the measurement obtained using the remote sensors and X is the water quality parameter of the interest, and A and B are the empirical factors. For example, the empirical relationship for the estimating chlorophyll content in water are given as follows, where E and B are the empirical contents derived from the shoot measurements. R1, R2, R3 are the radians at 460 mm, 490 mm, 520 mm respectively. Similarly, equation 4 shows the empirical relationship for TSS. The algorithm is used to detect the TSS in water using the MODIS data. It is also known as a TSM Clark organization. Clark algorithm. Then next, नहीं formulas, यहाँ पे formula दी गई है, इसका हमें कोई यूज करना नहीं है अभी. There are related to the subsurface erection reflectance are. It is to be noted that TSS stands for total suspended solids and TSM is the aronium for total suspended matter. The energy represents one of the TSM models which are empirical in nature, and relations such as equation 4 can be defined for TSS using bands of MODIS emergencies. Such relationships based on the field observation of the water quality parameters, the corresponding measurements obtained using the sensors are controlled by the properties of the water such as density, temperature, etc. Therefore, the relationship derived for the field condition may not be valid for the other areas. Okay, यानी जो हम भी रिलेशनशिप डिराइव करते हैं यहाँ पे वो अदर एरिया में यूज नहीं होता है. ओके, then radiative transfer model use a more general approach, simplified solution of the radioactive transfer event. PTEs are used to relate the water surface reflectance to the controlling physical factors. The E is sample RTE to relate the reflectance measured using the remote sensing technique to the suspended principles matter, suspended percolate matter is given below. यहाँ पे सब फॉर्मूलाज दी गई है, आपको सिर्फ जानना है कि इसका यूज कैसे होता है. ओके, then satellites and the sensors used for the water quality monitoring. The remote sensing of the water quality parameters in the earlier days employed fine resolution optical image from the satellites, then land use TM, however, poor temporal, that is temporal
monitoring. However, the poor temporal cover of the image on say 16 days was a major limitations in such studies. With the development of the new satellites and sensor, the spatial temporal radiometric random has been improved specifically using the sensors and sensors such as MODs with 36 spectral bands and RIS uh, with 15 spectral band. Better accuracy in the estimation of the water quality parameter is now possible. The next, a recent development in the remote sensing application in water quality monitoring is the hyperspectral images in monitoring the water quality parameters. The large number of the narrow spectral bands and in the hyperspectral solars help me improving the detection of the contaminants and organic matter present in the water. Use of the hyperspectral images or to monitoring and topic status of the lakes and ensures assessment of the total suspended matters, chlorophyll content in the surface water. Barometric surveys are for few examples. For more details on the hyperspectral or remote sensing data application is water quality monitoring, refer Coponin, etc. 2002, Tishman and Coffeyman 2002, Hawkward, etc. AL 2002, then Laser and Mobility 2007. Figure gives a brief summary of some of the works wherein the remote sensing data had been used for estimating the water quality parameters. 1, 3, or 4 shows the application of the remote sensing data for monitoring the various water quality parameters. For more details on the hyperspectral remote sensing, the application in water monitoring, refer to Pans, then Thisman and Kulfiman 2000, etc. Table 1 gives the brick etching. Table 1 gives a brief summary of some of the works within the remote sensing data have been used for estimating the water quality parameters. 2, 3, 4 shows the application of the remote sensing data for monitoring the water quality parameters. जो भी अंदर इम्प्योरिटीज है, टर्बिडिटीज है, उसकी वजह से कलर चेंज होता है. ओके. और जो भी अंदर कॉन्टामिनेंट्स है उसकी वजह से यहाँ पे कलर अलग दिखा रहा है. ओके. इसमें भी वही है. Aster images of the San Francisco Bay Area from SWIR bands B, a composite using thermal data and visible bands thermal data showing temperature variation only in water. Land areas are marked out. तो वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज है उसकी टर्बिडिटी, पीएच वो सब में चेंज होता है. तो यहाँ पे जो भी रिमोट सेंसिंग डेटा ले रहा है उसमें भी चेंज दिखाता है. ओके. तो उसके रिलेटेड ये
उसको हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं. कलर वेरीज फ्रॉम रेड फॉर द farthest to value for the coldest area. The warm temperature are found in the San Francisco and across the bay in the Oakland group of cities, which may be mostly due to the thermal pollution from the larger number of the areas, larger number of the industries located in the areas. Okay. Thank you.